just doing random stuff ताकि कुछ स्क्रीन पे नजर आता रहे. No, nothing. Local host के. परफॉर्मेंस एनालाइजर इस तरह से कोई पास जीपीयू का कोई है? Insight, NVIDIA Insight, sir. It's again. क्वेश्चन अगर आप परफॉर्मेंस से लेगा सारा सारा Everything. ठीक है. इससे कुछ मिल जाएगा वो जो सुबह जो हम बताया फायदा है वीडियो यूट्यूब पर फायदा है उसमें क्या फर्क है? कौन सा प्रोफाइलर? एनवीडिया प्रोवाइडर ने ऐड किया था वो तो आप प्रोफाइलिंग सॉफ्टवेयर और इनर परफॉर्मेंस कौन सा पार्ट कितनी परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन देगा प्रोफाइलर और कोड की परफॉर्मेंस So yeah, this like showing too much detail, referring to functions back, telling कहाँ memory consume हो रही है, कहाँ कौन सी चीज consume हो रही है. नहीं, ये प्रोफाइल कलेक्ट करता है और फिर वो प्रोफाइल एंड साइट पे खोल के आपको दिखा देता है हर चीज. एंड ये चीजें सजेस्ट भी कर देगा आपको कि कोड में यहाँ चेंजेस करें तो बेहतर हो जाएगा. बट देन अगेन लैम्प्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लैम्प्स is a big software. Like your problem is more about and problem with any big software like Gromax, lamps, these are giants. इसके कोड को चेंज करना is doesn't make much sense. Yeah, but one can figure out the right commands, the right parameters to use, और वो engineering domain field के लोग ज़्यादा बता सकते हैं instead of us who are more computational scientists. उसकी आप कह रहे हैं कि अंदर प्रोग्रामिंग पे वो तो स्टैंडर्ड है तो बात उन्होंने की वो तो Yeah, उसको improve करना it doesn't make sense unless you have a new technique और आप computational science की research में काम कर रहे हैं. और even then उसका अगर हम बहुत ही robust चीज आपने करना कि मेरी चीज बहुत robust है आपने prove करना है, then go for testing on lamps, changing lamps code. Otherwise it's not worth it. It's too much effort. Yeah, and engineering people understand it better. अच्छा मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एनालाइजर यूज करता हूं जी, लाइक कीपिंग इन माइंड आई एम यूजिंग लैम्प्स अगेन तो उस केस के अंदर मतलब इट्स गोइंग टू गिव मी व्हाट एनालिसिस इट्स गोइंग टू जनरेट आई वांट टू अंडरस्टैंड बिकॉज़ will tell you everything. आपके कितने रजिस्टर्स किस टाइम यूज हो रहे हैं, कौन सी कॉल कब डाटा लेके आ रही है, कब रजिस्टर यूज कर रही है, कब किस स्लॉट में जीपी यूटिलाइज हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है. इट विल एवरीथिंग ओके एंड इट या स्टार्ट कर लें. ओके मैं फिर दोबारा बता दूंगा अगर वो थोड़ा सा मेरा टाइम भी वॉक करते हैं तो आगे तक let's start. So अभी तक हमने बात की सिंगल नोड से परफॉर्मेंस लेने की, और then again कंप्यूटेशनल यूनिट्स तो यही है हमारे पास. अब हमने कोर की बात की है, कल हम ऑफलोडिंग की बात कर लेंगे, बट स्टिकिंग टू द कोर फॉर नाउ हमारे पास कंप्यूटेशनल यूनिट यही है हमारा. ओके, अगर हमने मल्टीपल कंप्यूटेशनल यूनिट्स पे लेके जाने चीज को, व्हाट इज द मिसिंग पार्ट? इफ यू वांट टू ऐड, मेरे पास ये कंप्यूटर है, इसमें मैं कोड अच्छा चला रहा हूँ,
मेरा कोड अच्छा चल रहा है, वही बाइनरी में इस कंप्यूटर पे चलाऊंगा वो भी चलेगी. How, what's the missing link between these two genes जिसको यूज करके मैं इनको से combined performance ले सकता हूँ? Communication. And for that communication we use MPI, message passing interface. Now MPI is just a library, it is just a wrapper around the real network things. MPI is not for the NIC guys, the network card guys. They don't. It is for SPC people, SPC scientists, to abstract away all the details and intricacies of networks from them. So yeah, let's explore network first. कि network में हमें क्या features available है, and then we'll look into MPI के using how simple is using MPI compared to them, and हम किन चीज़ों के साथ MPI को compare कर रहे हैं. यहाँ मैंने एक छोटी सी ये प्रोफाइलर चलाया था, TCP कनेक्शन आपस में एक बैंडविड्थ मेजर कर रहे हैं in local host पे, nothing fancy here. So this is based on TCP IP. हम इसको UDP पे भी चला सकते हैं, etc. So this is example of what actually goes on inside the network. Talking about like sockets, like networks, back नीचे TCP चल रहा हो, UDP चल रहा हो, sockets तो socket का concept वही रहता है. Sockets में first we need to, if you have just two nodes, we have to connect. Oh no, इतना easy नहीं होता. We have to create a socket. Socket बना के हम उसको bind करते हैं. उस bound socket से हम listen करते हैं. ठीक है, listen करने के बाद हम कहते हैं कोई request आए तो आप accept कर लें. ओके, उल्टा चल रहा है. कैसे होता है? नहीं. I don't know. Oh, this is it. Nice. Okay, this is better. Accept कर ले और फिर इसके बाद हम send and receive पे आते हैं, which is the only thing that we want to do in the end of the day. Okay, फिर हमारे पास client side होती है जिसमें हम again socket बनाते हैं, उसको bind करते हैं. Okay, उसको कहते हैं कि जनाब अब तुम सॉकेट बनाया, उसको बाइंड किया, इसको कहा कि अब कनेक्ट करो, और फाइनली वी हैव गॉट समथिंग टू some place we can receive. Okay, इस तरह चलता है एक TCP/IP connection, usual networking, day in day out. We stream bits and bytes, YouTube, TikTok, सब sockets पे चल रहे हैं in the end of the day. So does anybody know what a system call is? System call. System call is the interface between host and the operating system. Okay, जैसे write, read वगैरह, वो user और operating system के दरमियान एक interface होता है. आप वो करते हैं तो वो kernel pick करता है उसको. The thing that actually matters in any software,
Sorry. एक्चुअली टास्क जो हैं जो हमारे हार्डवेयर के में हो रहे हैं, जो हमारे हार्डवेयर को मैनेज कर रहा है, दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, तो things that actually happen inside the operating system, और यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से सिस्टम कॉल्स के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है. देयर इज नो अदर वे. ओके, एंड जो हमारा बाकी सारा सॉफ्टवेयर होता है वो चीज़ों को मैनेज करने के लिए होता है, रीडेबल रखने के लिए होता है. देयर आर लोड लाइक टीसीपी के ऊपर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं. सो टीसीपी हैज दिस सॉकेट्स एंड दीज आर सिस्टम कॉल्स जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं. अगर आप अपने लिनक्स सिस्टम में यहाँ पे लिखेंगे मैन लिसन टू गिव इट्स डिटेल्स. ओके, और देयर इज अ नाइस कमांड trace, जो कि आपका जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड सॉफ्टवेयर अंदर से जो मर्जी कर रहा हो, वो आपको सारी सिस्टम कॉल्स there. I can. Okay. Anyway, but I'm gonna trace it. ये बंद क्यों हो गया? So किसी भी कमांड के बीच आप trace लिखेंगे ना, I don't know ये बंद क्यों हो रहा है? Permission denied. Okay, so yeah, this is giving me all the system calls that are actually running. Software में जो मर्जी लिखा हो, असल में जो things that are making things happen are these like set sock opt, write, get sock opt, write वगैरह वगैरह. So yeah, like HTTP और क्या कुछ होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, स्ट्रीमिंग ये वो. like in the end of the day चीजें ट्रांसपोर्ट लेयर TCP होती है या फिर UDP होती है. those are basic concepts, but let's explore it more. Let me try to connect to a cluster that I'm used to working on, if I can. नहीं मिल रहा. ओ ये वाला कर लें. कौन सा था वो? ओके, हाँ इसमें ज्यादा वो. ये NVIDIA के क्लस्टर्स हैं. Since I'm used to working on them, मेरा सुबह शाम उन पे काम होता है, तो that's why. I think yeah, it's not. काफी लिमिटेड ग्रुप्स के पास जो भी रिसर्च करते हैं इन पर्टिकुलर हार्डवेयर पे. इट्स नॉट वर्थ हैविंग एक्सेस टू. ये बहुत बड़ा कोई रिसर्च काइंड क्लस्टर है. और सिंस आई एम यूज्ड टू इट, मैं अपने ऑफिस के क्लस्टर यूज नहीं करता. So yeah, I'm just gonna allocate a couple of nodes for myself. नोट्स पे अभी आपने कुछ लिखा है और नोट्स पे आपने कुछ भेजे. एलोकेट करना, मैं अपने लिए वो एलोकेट कर रहा हूँ. मैंने 2 नोड्स एलोकेट किए. दो नोड आपने एलोकेट किए का आपके एच आगे डब्ल्यू राइट डब्ल्यू के बाद क्या लिखे दो फिर कुछ ऐसे. सॉरी, पहले उस ये मतलब ये तो कोड है तो क्या वहां पे राइट W क्या ये चीज है? मैंने होस्ट के नाम दिए हैं.
ये होस्ट के नाम ये डिफरेंट क्लस्टर्स हैं, इसमें डिफरेंट पार्टीशंस हैं, इसमें क्लस्टर्स वेरी वेरी मच। तो इस आपका मास्टर होगा या के बीच में दो नोड्स होंगे जिसके नाम होंगे उस टू नोड्स या कैसे नहीं, these are intricacies of this particular cluster. Different clusters different तरीके से काम करते हैं, और to access particular nodes you have to read their documentation or ask their admins. ये like सुबह शाम का काम है. For example, अगर मैंने एक रेगुलर क्वेश्चन है कि अगर मैंने लोकल फाइल सिस्टम में फाइल रखनी है, वो कहाँ रखूं, सिस एडमिन बताएगा या डॉक्यूमेंट हुआ होगा. Like these are not generic concepts. So wherever you are, ठीक है, in whichever cluster you are, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, उसमें सैम्पल कमांड्स भी होंगी, या फिर उसके जो एडमिन्स हैं, सपोर्ट टीम है, उनसे क्वेश्चन कर लें. we do that day in day out, एक रेगुलर थिंग है, क्योंकि चीज़ें इतनी जेनेरिक हैं, there are so many design choices कि कोई फिक्स्ड जगह नहीं है चीज़ें रखने की. Okay. स्क्रीनशॉट कॉल हो जाएगा Yes, इसलिए मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि मुझे पता है कि कोई क्लस्टर किस तरह चलता है, कोई क्लस्टर किस तरह चलता है. तो इसमें आसानी के लिए जब भी आपने बेयर मेटल पे आता है, तो बेयर मेटल के लिए जो भी सिस्टम लेवल कॉन्फ़िगरेशन है, वो कॉन्फ़िगरेशन टीम या सपोर्ट टीम या डिजाइन एंड डेवलपमेंट टीम ने की होगी, उसके पास स्क्रिप्ट लिखे हुए होंगे, आपने उनसे वो स्क्रिप्ट पूछ लेने और वो यूज करते हैं. मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि किसी का कॉपी हो रहा है डाटा, किसी का वो तरीके वो बता देते हैं. आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आप अपना कोड लिखें और मैक्सिमम यूटिलाइज करें रिसोर्सेज को यूजिंग स्लर्म, यानी उसे कैजुअल करके उसके टाइम पे, लेकिन कि वो चलेंगे तो वो उसके हार्डवेयर लेवल पे मैक्सिमम आपकी परफॉर्मेंस आपको जनरेट करते हैं. और मैं खुद जब यहाँ था तो मेरी एक थी कि मैं कोड टीम से पूछता नहीं था, मुझे अब पता लगा कि ये चीजें मैं खुद से करता था कि अभी जिस तरह मान बता रहे हैं कि मेरी कोड मुझे ना पूछने वो और पढ़ना पड़ता है. तो एक आसान काम होता है कोड टीम को यूज करें, तो आपको उनके लिए कॉपी पेस्ट पड़े होते हैं सारा डाटा, वो बता देते हैं वो चीज कैसे कैसे लिंक करना है और उससे कैसे स्विच करना है. Sorry, Joe, actually, I wanted to profile on the node, but मुझे profile मुझे जो कमांड जो कि जेनेरिक कमांड है वो नहीं मिली. I'm copying its package, hoping के it can be I can run it from here. Okay, I hope जल्दी से compile हो जाइए. This is some basic stuff, but it is important to understand. एलोकेशन हो चुकी है. No, sorry. एलोकेशन हो चुकी है जो आप कह रहे हैं. I should not have done that, लेकिन अब मैं कर चुका हूँ. लॉगिन नोड में काम करनी चाहिए जो मैं, बट मुझे पता है ये क्लस्टर इतना वो नहीं है. आई जस्ट वांट, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब भी हम जैसे इस तरह आपने सुपर कंप्यूटर में आपने एक्सेस किया है, ठीक है, तो हमेशा उसका इंटरफेस आता है वो ऐसे ही होता है. Yeah, I mean you can change it to yourself. Okay, then again, ये क्लाउड से क्लाउड का वो जो इंटरफेस है या वेब का ऐसा नहीं होता जी. अब वो टर्मिनल टाइप का इंटरफेस मोस्टली मिलेगा. अब वो
बोला बात है कि उसको आप जैसे GUI मोस्टली ये इन्वायरमेंट ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट अगर आपको चाहिए GUI, then again उसके अपने तरीके हैं to get that. नहीं, those are things जो कि clusters based नहीं है. they क्या मैं कहने लगा था, Fugaku, folks like Japanese हैं, Riken boys, उन्होंने इस तरह की फैसिलिटी दी हुई है कि उनके लोग एलोकेट करके तो विजुअल्स देख सकते हैं. X11 इज अ थिंग, लेकिन वो आपको सपोर्ट टीम से अगेन पूछना पड़ेगा कि एनेबल्ड है कि नहीं. Sorry, I'm not sure. There are different packages, free and paid for these things. Open source stuff भी है, लेकिन again जो admin allow करेगा हम वही कर सकते हैं. अगर and usually वो allow करते हैं, लेकिन being a computer scientist जरूरत नहीं पड़ती. So we should not need them to begin with. मैं तो कर चुका इंटरनेट सीन्स, मैं तो लिख चुका सारा यार. ओके, ये कौन सी मशीन है, ये लेटेस्ट है या पुराना है? ये एनवीडिया की है सर. नहीं है क्योंकि यूपीएससी में कैंपस में जो पढ़ी है वो तो पढ़ी. सो ये एनवीडिया की है यूएस में, उनके अपने हैं, नॉट okay, so we are getting like 30 gigabits per second in the machine जिसमें जो कार्ड लगे हुए हैं वो हैं Connectex 6 कार्ड्स हैं और Bluefield 3 कार्ड्स हैं. Can anybody Google के इनकी क्या स्पीड है? How fast are they? Lecture 6 to 128. 128? Where did you get that number from? Infiniband के Sorry? ये Infiniband के है ना Lecture जी. इसकी वो ज़्यादा होती है. Yeah, so sorry? 20 gigabyte per year. 20 gigabyte, 200 gigabyte. 200 gigabits, bytes नहीं bits है, sorry. So yeah, 200 gigabits per second Connectex 6 है, और जो Bluefield 2 कार्ड है वो भी 200 ही है. Sorry, मुझे लगा 3 है और वो 400 है, but नहीं, 2 है भी. So yeah, we have 200 gigabits per second. हम सिर्फ 20 gigabits per second पे सेंड कर पा रहे हैं. तो इसका रीजन ये है कि हमारा जो प्रोसेसर है जो इसमें लगा हुआ है, which is not a bad processor to be honest, but okay, this is like a 40 core processor, but it cannot make a packet. It cannot, the fastest it can make a packet is 20 gigabits per second. So हम processing power consume कर रहे हैं processor की to make packets, और B वो हमारे नेटवर्क को फिर भी सैचुरेट नहीं कर पा रहा, हमारा निक तो बहुत ज्यादा जाया हो रहा है. Okay,
And for these reasons, we have different network protocols than TCP/IP. Okay, called Infiniband. The entire phenomenon is called RDMA, remote DMA. So, और इसके different flavors हैं. Infiniband is the most famous flavor. Rocky is another, iWarp is another, but Infiniband is the best out there. Mellanox ने बनाया था ये, टेल अवीव की कंपनी है, और फिर वो NVIDIA ने acquire कर ली. So, and Infiniband is not easy to program. But before going to what is Infiniband and stuff, let's see what performance do we get out of Infiniband. And sorry, commands are being. ChatGPT. Because I know it's not the straightforward thing. Let's try without ChatGPT first. इसमें हमें IP write bandwidth, फिर डिवाइस का नाम बताना पड़ता है, और डिवाइस के नाम होते हैं यूजुअली IPv डिवाइसेस में. IPTF to NetTF. Okay, इनमें से MLX5 underscore 0 up है. Let's go with that. Whatever is up. So yeah, IP write bandwidth. Device है हमारे पास MLX5 underscore 0. Okay. और इधर हम again same IP address देंगे. मेगाबाइट पर सेकंड बता रहा है. पैकेट साइज क्या है इसका? यार ये कोई कन्वर्ट करना, ये जो बैंडविड्थ आ रही है एवरेज गीगाबिट्स पर सेकंड में. नहीं किया किसी ने. अच्छा, ओके. इसका एक फ्लैग है जो कि गीगाबिट्स पर सेकंड में दे देता है. लगता है इंटरनेट स्लो हो गया हमारा. रिपोर्ट गीगाबिट्स.
100 gigabits per second में मिल गया. Okay, 105 gigabits per second. The reason we were able to get here, is that this time processor packet बना ही नहीं रहा. So processor message pick करता है from user space और packet network card बनाता है. Okay, और चूंकि network card पे dedicated logic है जो packet बना रही है, इसलिए it can do it in these kind of speeds, and it can saturate the bandwidth of the card. Okay, I'm not sure 100 card, 200 card, but you can see it 20 से तो बेहतर ही है. And then again, we have our processor is free now. But it's not easy to code RDMA because अब processor ने directly अगर message को उठाना है तो उसने memory से उठाना है और उस memory को पहले register करना पड़ेगा. It's an entirely different programming model from TCP/IP. I'm going to describe that, and yeah, then we are going to look at how MPI enables all of this and simplifies all of this. Let me give back the nodes. Okay, boys, naraz na hona, please. Yep, Blackboard. So, register memory. First, like you have to make a connection out of band, make an endpoint. इसकी अपनी एक out of band, like using an external TCP/IP connection, आपको उनके share करनी पड़ती हैं details about memory that you have registered. Okay, so जो भी memory space हम चाहते हैं कि डिवाइस एक्सेस करके यहाँ से उठा के वहाँ रख दे, अभी पहले रजिस्टर करनी पड़ेगी. उसको रजिस्टर करने का एक प्रोसेस है कि पहले प्रोटेक्शन डोमेन बनाए, पहले डिवाइस ओपन करें, प्रोटेक्शन डोमेन बनाए, मेमोरी रीजन रजिस्टर करें, blah 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 blah. We're not going to go in those details. Just you have a track. I'm just using track on हमारा goal क्या होगा, अब आप क्या कर रहे हैं? I just need to know that ये हमारा जो end goal होगा. Okay. क्या करेंगे? Just using the track. I'll get back to that in a moment. So yeah, the way we program RDMA, which is very high speed compared to TCP/IP, जिसके reasons मैं दोबारा iterate करता हूँ, is the following. You program it, you first register memories and stuff, instantiate things. There are like 3 to 4 things that are instantiated. में से एक प्रोटेक्शन डोमेन है, एक मेमोरी रीजन है. इनके एड्रेसेस आप शेयर करते हैं दूसरे एंड के साथ और फिर एक एंड पॉइंट बना लेते हैं. ओके, उस एंड पॉइंट को बना के फिर जब भी आप एक राइट रिक्वेस्ट बनाते हैं, उसको हम राइट रिक्वेस्ट बना के हम डोरबेल रिंग करते हैं एंड लाइक वी पॉपुलेट वूकी वर्क क्यू एंट्री. सिर्फ एक स्ट्रक्चर फिल किया है मैंने वूकी. It just fills in a structure and okay, इस एंड पे नहीं होता, सिर्फ एक एंड पे होता है. And then I trigger the doorbell trigger की. तो जो right operation है, that is gonna happen. वूकी में मैंने क्या लिखा है, वूकी इज जस्ट स्ट्रक्ट. उस पर लिखा है कि ये एड्रेस और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सेंड करना है. और बूम, जब मैंने वूकी, एक फ्लैग है जो कि मैप्ड है फ्रॉम नेटवर्क कार्ड टू कर्नल एंड कर्नल टू यूजर स्पेस. जब यूजर ने उसको फ्लैग को हाई किया तो नेटवर्क कार्ड ने खुद ही उस एड्रेस, उसने वो वूकी देखी वर्क क्यू एंट्री, उसमें देखा कि ओके राइट करना है, मैंने इस यहाँ से उठाना है, यहाँ पे रखना है, ये एड्रेस है, ये साइज है, खुद उठा के निक विदाउट टेलिंग प्रोसेसर एनी मोर, क्योंकि उसने पहले परमिशन ली हुई चीज़ रजिस्टर की हुई, उसने उठाया वहाँ से वो चंक और उसने दूसरे की DRAM में रख दिया.
उसको भी पता नहीं लगा, उस होस्ट को भी नहीं पता कि इसने रख दी है, just does it. Okay, and this is how we get so much performance. K Nick has a very specific logic ASIC inside it जो के पैकेट्स को इस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसको इस तरह ट्रांसफर करने के लिए TCP/IP से डिफरेंट प्रोटोकॉल की जरूरत है, सिंस इट वी नीड टू रजिस्टर ऑल द मेमोरीज एंड प्रोसेस बिफोरहैंड, ताकि विदाउट यूजर इंटरफेरेंस और विदाउट कर्नल्स इंटरफेरेंस डाटा खुद ट्रांसफर हो जाए. इज दैट अंडरस्टैंडेबल? जस्ट दिस प्रोसेस के किस तरह हम इस प्रोटोकॉल को यूज करके परफॉर्मेंस गेन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ A saturating our network and B freeing our processor. OS को bypass करके. Perfect. अब आप यूं लोग करें कि आपका कोड आप कोड लिख रहे हैं, कोड के अंदर दूसरे नोड का जो मेमोरी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन आपको शेयर्ड मेमोरी में या आप तरह से आप वर्क कर रहे हैं फील्ड ऑलमोस्ट कुछ ओवरहेड वो मान बनाएंगे कॉन्सेप्ट रिबन वही ये इस पे बन जा रहा है. So yeah, actually we could saturate the bandwidth. Again, I'm going to tell the whole story again, just that if anybody has lost, मेरी तरह किसी को नींद आ रही है तो ना तो हमने पहले शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर देखा, कोड है एक से ज्यादा वो मान में बता दी ओपन एमपी के थ्रू, ये थ्रू नेटवर्क कनेक्टेड है और हमारे पास एक और शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर है, इसे नोड पे पहले ठीक है. अब आप यहाँ पे कोड लिख रहे हैं और इसकी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करें उस्मान लॉजिक एग्जैक्टली निक खुद एक्सेस कर रहा है, वो खुद ही उठाता है, खुद ही रखता है. हमारा स्टोरेज तो हार्डवेयर क्या है ना, हार्ड डिस्क सिंपली वहां से नहीं, स्टोर जब भी एक प्रोसेस इंस्टेंशिएट हो गया है और वो डाटा पे काम कर रहा है तो उसको DRAM नजर आती है, डाटा DRAM में होता है, वो उसका एक उसकी वर्चुअल मेमोरी में होगा डाटा. सो वो DRAM से उठाता है, निक DRAM से खुद उठाता है. लाइक यू वुड हैव हर्ड अबाउट DMA एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में काफी लोगों ने सुना होगा कि एक DMA कंट्रोलर खुद ट्रांसफर करता रहता है. दिस इज just the extension of DMA over the network, making all those copying things out of the DRAM into the NIC using DMA controller. NIC खुद ही आगे सेंड करता है, वो दूसरा NIC खुद ही राइट कर देता है, प्रोसेसर को पता भी नहीं होता उधर वाले को. NIC प्रोसेसर का रोल प्ले कर रहा है, इवन बेटर देन प्रोसेसर, बिकॉज उसके अंदर इस स्पेसिफिक काम की लॉजिक लिखी हुई है. मेमोरी मैनेज कर लो ऐसा, जो वो मेमोरी आपकी ट्रांसफर कर मेमोरी कॉपी कर रहा है डायरेक्टली. डिफरेंट सेम थिंग डिफरेंट व्यूज. मेरा व्यू ये है कि मेमोरी मैनेजमेंट या मेमोरी और प्रोसेसर कहेंगे तो प्रोसेसर एक साथ कंप्यूटेशन भी कर रहा है. मेरा नजदीक मेमोरी को शेयर्ड डिस्ट्रीब्यूट को शेयर में लिया डायरेक्ट एक्सेस देगा. डायरेक्ट एक्सेस वो मतलब करना उस्मान आपको बता रहे हैं वो वाला वो पार्ट, लेकिन दे ही रहा है. So these things are confusing. That's why we use MPI. Again, I'm gonna share the same story once more, और फिर हम MPI पे hands-on काम करते हैं. There are a lot of transport layer protocols, and they are not just software protocols, वो hardware के अंदर भी होते हैं, और हमेशा आइडियल नहीं होता कि आप एक ही ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करें या फिर उसी में खुद कोड करें, एटसेट्रा एटसेट्रा.
network and vendors, there are people out there who know their things better, और उन्होंने वो सब information जो है वो inculcate की हुई है for HPC users in MPI. And even things like Horror use MPI inside. और MPI भी necessarily RDMA नहीं चलाता, वो जो कुछ भी available है वो सब optimal तरीके से यूज करता है. अब उनमें से एक मिसाल, अगर आपके पास शार्प enabled switch है, so उसको प्रोग्राम करते हुए तो जान निकल जाएगी अपनी, but MPI can do it out of the box. I'm gonna give you an overview of what Sharp does, and then we'll move to MPI. MPI में configure करना पड़ेगा, वैसे let's say कि default में उसको हो जाएगा. We'll see. Sudo apt install OpenMPI. Oh, MPI, by the way, MPI is not a code base. Just say MPI is a standard for library. OpenMP is another standard for directive-based programming. OpenMP की implementations compilers में होती हैं, जैसे GCC, Clang, NVC, etc. MPI की implementations libraries में होती हैं, और उसकी जो fastest implementation है वो है MVAPIC, जो कि Ohio State University ने बनाई है. Intel ने OpenMPI बनाई हुई है, which is the implementation that is easiest to work with. हर किस्म के हार्डवेयर में चल जाती है. MPIC is a good project from Argonne National Laboratory. There are multiple implementations out there. OpenMPI does a great job for learning. I don't think कि आपको आवाज आएगी. Place to perform data reductions. Let's take a commonly deployed network topology. Can you guys? I can describe. Okay. For example, you have operation. All reduce is basically a phased approach of iteration. These are nodes. These are switches. एक पूरा cluster है, हर switch के साथ 8 nodes connected है, और वो फिर switches आपस में इस तरह connected है. Okay. ये एक supercomputer topology. Flat tree is a very common topology. Flat tree is very common, ना? Like hypercube के बाद flat tree is. पहले hypercube थी, अब flat tree लोग काफी use करते हैं. For this example, So server nodes if you अगर सब nodes पे मैंने अपने max निकालना है distributed reduction कि local nodes that are grouped by the first level इनमें maximum एक पूरा एक data set जो कि सब पे divided है, इनमें maximum value क्या है, या उसका sum क्या है, उन सब items का sum क्या है. So वो सबको भेजूंगा, add करूंगा, फिर share करूंगा, यार partial sum ये है, फिर बाकियों को भेजूंगा, partial sum ये है, partial sum ये है, partial sum सबको share करेंगे, फिर वो अपने वाले पे add करेंगे. बार-बार हमें access करना पड़ रहा है different clusters को, और different parts of network को चीजें share करनी पड़ी, जैसे ये दिखा रहा है. The entire process is very costly. Understandable for now. CPU cycles. So there's a lot of communication going on here. The NVIDIA ने Sharp technology develop की, is the highest performing in network which available to address these challenges. Devices. they compute this thing. इतनी ज़्यादा बड़ी logic नहीं होती, like max, sum, min, इस तरह की चीजें उन्होंने switch में डाल दी. Now you just have to send data once. वही switch बता देगा कि what is the answer, और वही सबको आगे distribute कर देगा. मेरे पास min ही आया, सब ये ले लो. मुझे I know everything क्योंकि उसके through जा रहा है सब कुछ. So instead of making processor make the decision, उसने खुद processing capability decision दे दिया. If we had to program it ourselves, so traditional methods काफी मुश्किल हो जाता. But MPI में already MPI reduce की call है. If you have a sharp enabled switch, खुद ही use कर. remains extremely low and predictable. That is how optimized MPI is. It is in favor of both NVIDIA and us to enable all the advanced features in MPI as soon as possible, because then they get access to a lot of users, or users को एक easily accessible programmable interface मिल जाता है.
नहीं तो काम रजिस्टर रीड राइट करते फिरते और ट्रिगर करते फिरते चीजें. Okay, let's get to MPI now. Offloads by पहले 4:30 जब जब सारे बने 4:30 कर लेंगे. श्योर, ठीक है. मुझे लग रहा है कि हम काफी कवर कर चुके हैं. हम थोड़ा सा सैचुरेट हो गए. Sure, I guess my 20 minutes left. Okay, let's get to syntax, which is the easy part. We know the motivation behind doing MPI. So now since MPI is a library, उसको उस पे हमें init नहीं include करना पड़ेगा. Sorry. Usually MPI CC से हम कंपाइल कर लेते हैं और जो उसकी कमांड होती है वो अंदर GCC ही यूज कर रहा होता है एंड जस्ट एड्स अ लॉट ऑफ इंक्लूड्स एंड लिंक्स लाइब्रेरीज इंक्लूड वगैरह वगैरह. वरना तो हमें GCC की लंबी कमांड लिखनी पड़ती, अब नहीं लिखनी पड़ती. अगर हमने अपना कंपाइलर यूज करना है वी कैन जस्ट डू दिस. And this is for OpenMPI. Look, जो nitty-gritty details हैं वो फिर is equal to Clang, and now it is in Clang. You can see the difference there. So these are nitty-gritty details जो कि vary करती हैं across compilers, but across different implementations, OpenMPI, MFH, etc. But the programming remains same. So MPI init और finalize के दरमियान चीजें चलती हैं सारी. Let's MPI CC MPI.c ये MPI int star argc that's it. No नहीं. इस तरह होता है. Vector or vector find or vector to run. Oh yeah, I'm sorry. I was doing correctly here, but here it was not correct. Yeah. /MPI, nothing happens. Segmentation fault. क्यों? Where rank to find शायद इसका these MPI rank with the time. नहीं सर उसका मसला नहीं है. Excellent. Oh no, ये लोकल मशीन पे मैं नहीं चला सकता. ये मुझे तंग कर रहा था. That problem got fixed. Recently मुझे लोकल मशीन्स पे ये चलाने से ना प्रॉब्लम कर रहा है.
So I'll rather go to a cluster or something. Sir, हम cluster access कर सकते हैं अपना यहाँ से जी sir. CAID MEIN That's it. Yes. Oh, password मुझे वही वाला different है, sorry. ठीक है. Okay, now we are cluster here. So आपको भी मसला आया था जब एक authorization वाला, please help me fix that too. मेरे काफी काम की वजह से फंसे हैं. Okay, I'm not gonna do the whole thing now. बाकी ये जो स्टेप है ना इस स्लाइड पर ही स्टेप बाय स्टेप आपने इनिशियल मिनिमम कितना करना है और वो आपको वो मिलेंगे इससे फास्ट का समझिएगा मतलब ये रिकॉर्डेड भी मिलेगा आपको और स्लाइड भी मिलेंगे तो आप आराम से अभी तो सर कुछ चलाया नहीं मैंने, खाली कोड अभी फास्ट हो गया. ओके सो या एमपीआई का जो कोड है ना वो इन चीज़ों के दरमियान होता है, और जब हम एमपीआई चलाते हैं ना वी डोंट डू डॉट स्लैश एमपीआई, वी यूज एमपीआई रन, और उस पर हम नंबर ऑफ प्रोसेस बताते हैं एंड वी कैन आल्सो टेल कि मुझे कौन कौन से होस्ट पे रन करना है. और अगेन वो जो 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 सॉरी अगेन जो डिफरेंट होस्ट मेंशन करनी है वो इम्प्लीमेंटेशन पे है. ओपन एमपीआई कुछ और करेगा, ये यहाँ पे सर ओपन एमपीआई और एमवेब पे कुछ और करेगा, एमपी कुछ और करेगा. ओके लेट्स गेट टू द रियल पार्ट. सो अगेन जब एमपीआई रन करते हैं तो ये जो np2 है 4 है, दीज आर द नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो इंस्टेंशिएट होते हैं. ओके और इनके अपने अपने रैंक्स होते हैं. रैंक इज एन इम्पोर्टेंट. एक एमपीआई कम्युनिकेशन वर्ड है, एमपीआई कम्युनिकेटर है विच इज द वर्ल्ड कम्युनिकेटर विच इज डिफॉल्ट. डिफरेंट सब कम्युनिकेटर बना सकते हैं, हम अभी यूज पर नहीं जाएंगे. वी विल सी एमपीआई गेट साइज, कॉम साइज और एमपीआई कॉम रैंक. ये कौन वर्ड पहले क्या पहले नहीं आता मेरे पास पहले आता है मुझे नहीं पता. पहले आता है. तो यहाँ पे वो रैंक स्टोर कर देगा, यहाँ पे वो साइज स्टोर कर देगा एंड देन वी गोना प्रिंट इट. रैंक और साइज बता दीजिए. So rank rank is the particular ID of that process. Okay. और size total size है उन processes का. Okay. Now even if I go across different hosts, let's go across different hosts. Let me first run
command to W H एक तो master और दूसरा कौन सा सर नोट node 01 and let's run host name first. I made a mistake. H different है? और ये आपसे भी हुआ था कल, पता नहीं क्या हो गया था बीच में। ये ओ तो है नहीं कहीं पे क्या? नहीं मास्टर भी है। नहीं उसमें इसका चलता है। um let's see. Dash okay. We have this पहले ही हमने रन किया होगा, उसको देख लेते हैं कि किस तरह रन किया हुआ है सदक साहब ने। ये तो डबल एम ओके हम ये एरर देना है आपके ओवर सब्सक्राइब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। हाँ अब आपके पास ये कमांड बाइनरी मुझे बाहर की पड़ेगी। Anyway, so yeah, before going there, we know that हमने MPI रन सिर्फ MPI रन करें ना हम, तो वो डिफरेंट नोड्स पे मैंने उनका होस्ट नेम रन किया है और इस तरह वो हो गया है। अगर मैं करूँ SSH node 01 PWD thread copy ठीक है। अब अगर हमने मल्टी नोड पे करना है, हम पहले ही हर नोड पे एक बाइनरी या एग्जीक्यूटेबल फाइल same binary हर नोड पे पड़ी होनी चाहिए। And the trick I do at times for heterogeneous nodes, मैं सेम नाम की बाइनरी जो कि डिफरेंट नोड्स के लिए कंपाइल होती है, डिफरेंट नोड्स को रख देता हूँ, MPI perceives them as same और उसको चला देता है। Okay. लोकेशन भी सेम लोकेशन और पास में होती है। अगर हम पेज में डालते हैं अभी वो बिन से फाइल है हाँ ये सिर्फ मकसद ये है कि आपको ना एक पूरा क्लस्टर का कॉन्सेप्ट पता लगे कि फाइल ऐसे चलती है। मैंने जैसे बताया कि मैं खुद 2-3 साल जब सुपरकम्प्यूटर चलाता था, मुझे इतनी अच्छी कोड मिलती थी कि मुझे समझ ही नहीं आई क्या। तो इसलिए आपको सारा कुछ ना अभी स्लर्म और कॉन्फ़िगरेशन की जब हो जाए तो यूजर को ये चीज़ों को नहीं करना। Okay, so the same code जो कि पहले चल रहा था अभी भी वही चल रहा है, but now we know कि आधे मास्टर नोड पे और आधे नोड 1 पे। Okay, it gave us an abstraction के नीचे सेम मशीन चल रही है, वही काम चल रहा है, you don't need to worry about anything. Okay, so usually the way coders code, the way every MPI code which is coded is that वो इनमें से बेसिक MPI कम्युनिकेटर्स के साथ वो खेल के फिर डिफरेंट दुनिया बना लेते हैं, अपनी छोटी छोटी वर्ड्स बना लेते हैं जो कि डिफरेंट काम करते हैं। बट एवरी बेसिक सिंगल वर्ड अगर MPI एप्लीकेशन होती है वो ऐसे ही काम करती है कि वो एक नोड को मास्टर कंसीडर कर लेते हैं, वो वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है और फिर खुद भी करता है और बाकी सब वर्क करते रहते हैं। So the way things happen are following. If rank is
इक्वल टू 0, ये लाइन हर जगह मिलेगी आपको। I am your master, parents. Else I'm just a worker. MPI-CC, MPI run. Okay, sorry, hostname. ठीक है वो MPI-CC. Oh, I know what happened. Yeah, let me turn this off. See, one of them is master, वो वर्क डिस्ट्रीब्यूट करेगा और बाकी सब वर्क रिसीव करेंगे। कैसे करेंगे? सेंड से और रिसीव से। वन सेंड करेगा others को, others will just receive and start doing their thing. Okay, और send का syntax क्या होता है? Simple MPI underscore send. I don't know. MPI com वर्ड हमेशा पहला आर्गुमेंट होता है। ठीक है, फिर शायद डेस्टिनेशन रैंक होता हो, which I would say 1 for now. Let's assume कि हमारे पास सिर्फ 2 रैंक चल रहे हैं। But yeah, I'll scale these concepts later for you. ये 1 को भेजेगा, क्या भेजेगा? इसे को चलो I don't know 80-10 ही भेज दे। ओके, साइज ऑफ इंट होगा शायद, टैग होना चाहिए कुछ, I don't know. Let me see if whatever I'm doing is correct or not. Tag. Data type, destination tag. Yes, we can just look here. Okay, com वर्ड आखिर में है, बफर है, number of elements in that buffer है, data type है. So MPI has its own data types. In the end of the day होती वही है जो हम उनको बना रहे होते हैं, but still we gotta use them for standardization purposes. So let's do this. Let's do this. So what? Tag. Tag. Yeah, I'll get to that later. Let's not complicate our lives. Okay, this is one. This should be our data type. I think यहाँ भी इसको मैं use कर सकता हूँ। Can I? I don't know. नहीं, I don't want to. Buffer count, data type, destination tag, convert. Buffer count, data type, destination is 1. ये size है, ये destination है, tag है और आखिर में पे convert. Okay, whatever. और दूसरी साइड पे इसी तरह का कोई रिसीव कोड लिखा जाएगा, जिसमें आई थिंक एक एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट होता है टू चेक द स्टेटस के रिसीव हुआ है कि फेलियर हुआ है। अगेन आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, बस मुझे ये पता है कि एक तो let's although these are different processes, I'm just changing, तो डाटा उसका सेंटर डाटा खाली, I'm just changing, उनके दोनों के different होंगे variables, so they're different processes in different systems. I'm just changing the data type for clarity. Okay, और
इसने रिसीव करना है अब रैंक 0 से। एक और होता है इसका, ये अच्छा है, सी का आधी चीज तो कमांड लाइन में मिल जाती है डॉक्यूमेंटेशन की। एमपीआई कॉम्पोनेंट के बाद एक स्टेटस है बस, स्टेटस में मैं नैली भेज देता हूँ। आई थिंक आई कैन डू दैट। एमपीआई सीसी स्पेलिंग गलत कर दिए होंगे। डाटा टाइप्स मेरी टाइप सॉरी yeah compiled, so I'm going to just run to processes. Okay, one को नहीं हो रहा, एक ने send की, एक ने finalize, receive नहीं, I made a mistake. Okay, that's clear. जी sir? Oh yes, definitely I made a mistake. I'm sorry. सर दूसरी साइड पे दूसरी एमपीआई पड़ी है, वो कंपाइलर वो नोड कुछ और रन कर रहा है, ये और कर रहा है, वो सेंड तो कर दिया। You have to have same binary everywhere. लेकिन इस केस में सर्वर रिसीव हुई है, आई एम सर्वर वर्कर, लेकिन वर्कर आगे कम्युनिकेट नहीं करता। I've made another mistake, sir. सेम बाइनरी आप कैसे लाते हैं? मैंने कॉपी कर रहा हूँ। वो काम के लिए I'm just this command SCP, yeah. लेकिन आपके ना वैसे जो क्लस्टर होगा ना जनरली, उसकी ये वाली जो होगी ना डायरेक्टरी यूजर वाली है, ये शेड होगी बेसिकली। जब शेड होगी तो ये करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ बताने के लिए बता रहे हैं ये शेड इधर भी आपको होना चाहिए। लेकिन इस केस में जब ये शेड होगी तो ऑटोमेटिकली इसके साथ ये डिस्क जो होती है सिक्योर कॉपी करने की जरूरत नहीं है। फिर सिक्योर कॉपी वैसे होती है जब आप कंसीडर करेंगे होगी, हमने करनी है एनएफएस पे हम जाना चाह रहे हैं, हम पैरेलल फाइल सिस्टम पे जाना चाह रहे हैं, वो जरा महंगी, तो अभी हम देखते हैं। अगर हम जीपीयू में मल्टीपल कोर में करेंगे वहां पे कुछ करने की इसकी जरूरत नहीं। Let's talk about it after this. I'm just confused ke why is this not working? Sure, things are in place, tag same है, send one को कर रहा है ये send, I should be printing sorry receive 0 से करना है, receive 0 से कर रहा है ना, और send 1 पे कर रहा है, तो we're gonna check where we're going wrong. तो मास्टर रैंक 0 है, अदर रैंक 1 है। Passing that, जो 0 है उसने 1 को भेजना है और 1 ने 0 से रिसीव करना है, लेकिन कर नहीं रहा। Let's ask ChatGPT क्या मसला आ रहा है। Something minor. There's a potential deadlock because MPI sent in rank 0 doesn't have a matching MPI receive in rank 1. Fix it. Por favor. Doesn't have a matching MPI receive.
तो मैंने क्या लिखा है? MPI send, MPI receive, मैच भी नहीं कर रहा. What did it change? Okay, इसने नहीं. नीचे भी बंद Sorry? नीचे भी बंद है ये सेंड कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है. इसने 1 0 convert 1 0 MPI status ignore 0 0 MPI status ignore 1 0 0 0 1 0. This is 1 0, this is 0 0. MPI status ignore इसको doesn't matter, but I don't know. Let's see इसका कोड कैसे चलाता है इसको. Ah, yeah, I can just delete the last 2 lines. Okay, send delete किया, receive delete किया. MPI CC underscore GPT.c, same binary को copy किया, MPI run किया. Getting stuck too. क्या? तो आपसे दैट को करके किया है फिर दोबारा Sorry. That is getting stuck too. I'm not sure where I'm going wrong. Anyway, this is the right thing to do here. We can fix this in the morning. So the point is that everybody just does this, send and receive. That's all. इसको करने के different तरीके, because different तरीकों से हमें डाटा चाहिए होता है. कभी कभी हमें डाटा स्कैटर ब्रॉडकास्ट करना होता है, क्योंकि मास्टर ने सबको भेजना है तो ब्रॉडकास्ट करेगा. ऑल टू ऑल करना होता है, सबने सभी को एक आइटम भेजनी होती है, तो उनकी भी लाइक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के इस तरह जिस तरह मैंने पढ़ के भी कोड किया है. इजी जस्ट बफर्स फिल इन करने हैं, आर्गुमेंट्स फिल इन करने. रिडक्शंस की भी अपनी कॉल्स हैं, एमपीआई रिड्यूस के इन सब का ये पर्टिकुलर आइटम देखो, इन सब नोड्स में ये अरेज हैं, इन सब में से बता दो मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है, सम क्या है. सब हम वो एक आंसर देता है उसका सबको. सो and it uses the most optimal transport layer underneath. And in case of reductions, again, they are not parallelizable, but it tries to parallelize them, and instead of reducing the complexity by an order, it reduces the complexity from n to log n. Yeah. And yep, that's all that MPI empowers us with. इसके आगे कोडर को खुद अपना कोड अडेप्ट, हमारे पास ऑप्टिमल कोड तो OpenMP का पड़ा हुआ है. We just have to
distribute the data, make sure it computes, and combine the result in the end. That is what supercomputing is all about. Okay. तो बाकी कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं Mhm. जिसमें एक ही कोड सेम कोड में मतलब ओपन एमपी और एपीआई दोनों के ऊपर जी आपको एक तरह का कोई एग्जांपल मिक्स क्वार्टरमैन का जो मैंने एग्जांपल दिखाई है जो वो कोड मिल जाएगा We can show you. There's there are many. काफी सारे ये इस तरह का ठीक है वो मास्टर की तीसरी रिपोर्ट है साथ आपको रिपोर्ट मिल जाएगी मेरी ही है मतलब मैं जनरल और एटलीस्ट आप पूछ सकते हैं क्या कहते हो और पेपर पे पब्लिश करो तो आपको ज्यादा डाटा मिलेगा बाकी है कि चैट जीपीटी लिख के दे सकता है There are many mini apps out there जिनको जो representative applications होती हैं for larger applications like lamps की है mini FE, ठीक है, Chromex की है mini MD, जो कि एक million 2 million lines of code की database की जो computational representation है वो less than 5,000 lines of code पे देते हैं. So they are very good to explore whenever we work or develop any new computational techniques. वो सब हम उन mini apps पे try करते हैं like I do mini MD, and then we port all those techniques to things like Chromex or lamps. Yep. Any other question? That's all. Thanks. तो हमारे पास 2-3 जीपीयू पड़े हैं एक को मैं नोड 1 एक नोड 2 बना के बाकी का Share them with those later if you want to look into data sharing. आप TensorFlow या PyTorch यूज करते हैं अगर आप ये यूज करते हैं फिर उनकी स्ट्रेटजी का उनका नाम शेयर वन भी बताने आपको भी वो स्ट्रेटजीज एचपीसी एक्सपर्ट